Hello, wonderful kids. Time to start a new chapter of geography with your teacher Raj. And today we are going to start chapter number 6. That is natural vegetation and wildlife. क्या पढ़ेंगे आज हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में. So let's start it. What you will learn in this chapter, children: forests, grasslands, desert vegetation, and tundra vegetation. Now let's begin. Different type of vegetation and wildlife is found in different parts of the world. अब अलग-अलग parts में world के अलग-अलग तरह के vegetation और अलग-अलग तरह के wildlife देखने को मिलते हैं. Plants found naturally in a region are called natural vegetation. एक किसी भी रीजन में किसी भी जगह पे जो प्लांट्स नेचुरली ग्रो करते हैं उन्हें कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन. A natural region is homogeneous with regard to climate, soil and natural vegetation. Natural vegetation is a gift of nature. Natural means जो हमें नेचर ने दिया, तो वो हमें नेचर से गिफ्ट मिलता है. जो चीजें नेचुरली उगती हैं वो हमें नेचर का गिफ्ट होता है. It includes plants that grow naturally. इसमें plants आते हैं जो कि naturally grow. They provide food for animals. Since plants are the only organisms that can convert solar energy into food energy, they are called primary producers. अब ये जो plants naturally उगते हैं, ये तो food होता है किसके लिए? Animals को food provide करते हैं. और ये plants, since plants are the only organisms, ये plants जो हैं वो केवल यही एक organism है जो कि solar energy को food energy में convert करता है, इसलिए इनको कहा जाता है primary producers. Natural vegetation such as forests can regenerate after a long time, which is called the secondary forest. Natural vegetation is usually related to an ecosystem. और natural vegetation को ecosystem से relate किया जाता है. It is also termed as flora. इसको क्या कहा जाता है? जो natural vegetation होती है उसको flora कहा जाता है. Types of natural vegetation vary according to climate, soil and altitude. Okay? ये जो अलग-अलग तरह के natural vegetation है, ये कैसे vary करते हैं? किसके according? Climate, soil और altitude. The factors that influence the growth of natural vegetation are. अब ये नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ के जो अलग अलग फैक्टर्स हैं वो क्या है? ऑल्टीट्यूड ऑफ लैंड, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल. The types and thickness of vegetation vary from place to place because of variation in these factors. ये वेजिटेशन की जो थिकनेस होती है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की क्यों होती है? क्योंकि ये वेरिएशन इन फैक्टर्स में अलग अलग वेरिएशंस की वजह से थिकनेस भी वेरी होती है. द प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर. जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्रिंसिपल नेचुरल वेजिटेशन हैं, वो कौन कौन से हैं? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स. फॉरेस्ट ग्रो बेस्ट इन अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. जहाँ पे जिस जगह का क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड होता है वहाँ पे फॉरेस्ट सबसे अच्छी होती है. Grasslands grow well in the region of moderate rainfall. और जिस जगह पे moderate rainfall होती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, वहाँ पे grasslands बहुत अच्छे से grow. Shrubs grow well in dry regions. और जो dry सूखे इलाके होते हैं वहाँ पे shrubs अच्छे grow. Forests. Did you have your breakfast? Read the newspaper? Switched on a light? Traveled to work in a bus or car? Signed a check? Made a shopping list? These are the questions. Got a parking ticket? Cleaned your nose into a tissue? Forest products are used in all these daily routine activities. अब ये सब जितने भी क्वेश्चंस अभी पूछे गए आपसे कि आपने ब्रेकफास्ट किया, कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, या आपने लाइट को स्विच ऑन किया, या आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने बस या कार से ट्रैवल किया, या आपने एक टिश्यू यूज किया हैंड साफ करने के लिए, नोज साफ करने के लिए,
तो ये सारी चीजें जो हम वर्क करते हैं, इन सब चीजों में क्या होता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूज होते हैं. Forest can be defined as a closed growth of trees found at a certain place. Forest क्या होते हैं, जहाँ क्लोज ग्रोथ ऑफ ट्रीज होते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, ग्रोथ होता है उनका एक पर्टिकुलर सर्टन जगह. A true forest is one in which trees grow so close to each other that their canopies touch. अब एक ट्रू फॉरेस्ट उसी को कहा जाता है जहाँ पे ट्रीज जो है वो इतने पास पास उगते हैं कि उनका जो टिप होता है, कैनोपीज मीन्स जो टिप, वो टच करता है एक दूसरे. Forests across the world can be categorized into 6 types. अब हम ये 6 types के फॉरेस्ट पढ़ें. कौन कौन से? Tropical evergreen forest. The tropical evergreen forests usually occur in areas receiving more than 200 centimeters of rainfall and having a temperature of 15 to 30 degrees Celsius. अब एक tropical evergreen forest कहाँ पे होता है? जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश होती है, रेनफॉल होती है, एंड वहां का टेम्परेचर जो है वो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है. Since the trees are always green, they are called evergreen forests. और इन्हें evergreen forest इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो trees हैं वो हमेशा green रहते हैं. They are also called tropical rain forests. They occupy about 7% of the Earth's land surface and harbor more than half of the world's plants and animals. They are found mostly near the equator and areas close to tropics. और ये कहाँ मिलते हैं ये वाले forest, tropical evergreen? Near the equator और areas जो tropics के आसपास हैं. They are mainly found in the Amazon lowlands, selvas in South America, Congo Basin in Africa, and certain islands of Southeast Asia. इन जगहों पे tropical evergreen forest मिलता है. These forests are dense and multi-layered. बहुत घने, देखिए tropical evergreen forest बहुत घना जंगल होता है, घना फॉरेस्ट होता है, एंड मल्टी-लेयर्ड, बहुत सारे लेयर्स होते हैं. They are mostly tall and hardwood types. Leaves are broad and give out excess water. Leaves इसके बहुत बड़े बड़े होते हैं और excess water भी. The branches of the trees form a canopy so they prevent the sun rays from reaching the ground. और वो canopy की तरह branches जो है इसकी canopy की तरह बन जाती हैं और वो prevent करती हैं sun rays को ground तक आने. This results in negligible undergrowth with only the creepers clinging to the tall trees that vie with each other for a greater share of sunlight. These trees do not shed their leaves at a particular time in a year. अभी आप लोगों ने देखा होगा जो trees होते हैं वो एक टाइम पे क्या होता है, उसके पत्ते सूख जाते हैं और गिर जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं. लेकिन इस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं, they don't shed their leaves. उनके leaves कभी नहीं गिरते. Some of the trees found in Indian tropical forests are rosewood, mahogany, rubber and ebony. ये जो trees हैं ये Indian tropical forest में मिलते हैं. Bamboos and reeds are also common. The wildlife found here includes tree-dwelling animals such as monkeys, apes, sloths, bats, tree lizards. और ये एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. फ्लाइंग स्क्विरल्स एक्सेट्रा. एलिगेटर्स, अफ्रीका में एलिगेटर्स. फाइन. A very large variety of birds and insects also thrive in these regions. और इन regions में बहुत large variety में birds और insects भी पाए जाते हैं. Next is tropical deciduous forest. These forests are also called monsoon forests. इनको monsoon forest भी कहा जाता है. They are mainly found in eastern North America. कहाँ मिलते हैं ये? Eastern North America, Western Eurasia, and Northeastern Asia. Trees of deciduous forests shed their leaves at the beginning of summer to conserve water. अब यहाँ के जो trees होते हैं
ये क्या करते हैं, अपने लीव्स इनके गिर जाते हैं। कब? बिगिनिंग ऑफ समर, जब समर स्टार्ट होने वाला होता है तब, जिससे कि ये वाटर कंजर्व करते हैं। These forests have a thick undergrowth of small trees and shrubs. और यहाँ पे देखिए, this tropical deciduous forest में क्या होता है, thick undergrowth होता है छोटे छोटे पेड़ों का and shrubs. They are less dense and of medium height. बहुत ज्यादा घने नहीं होते हैं और medium height. Deciduous forests are found in subtropical regions which get moderate sunshine and rainfall. वहाँ पे moderate sunshine मिलता है और rainfall भी moderate. The deciduous forests of Karnataka have sandalwood trees. कर्नाटका की जो deciduous forest है वहाँ पे sandalwood trees. In these forests, the trees are fewer and shorter. कम trees होते हैं और height भी कम है. Bamboos and canes are also grown here. The trees shed their leaves at the beginning of summer. The important trees of these forests, अब इन forests के important trees कौन से हैं? Teak, sal, palm, shisham, neem and sandalwood. These have great commercial value. Commercial value बहुत ज़्यादा. Since wood from these trees are used in furniture and buildings. क्यों है commercial value ज़्यादा इनकी trees की? क्योंकि ये ज़्यादातर buildings और furnitures के लिए use किए जाते हैं. These forests experience temperatures that range between -30 degree and 30 degrees Celsius throughout to make furniture, construction materials, etc. Mangrove thickets abound here in marshy and deltaic regions. A large part of these forests have been cleared for cultivation. और इस forest का ज़्यादा part जो है वो clear किया गया है cultivation के. Tigers, lions, elephants, langurs, monkeys, etc. are the common animals of these regions. Did you know mangrove forests were abundant in Kerala about a century ago? एक century ago पहले क्या था, केरला में mangrove forest बहुत था. Now they are found in patches along the coastal areas. Kumarakom in Kottayam district is perhaps the best known preserve of mangroves. Next is temperate evergreen forest. Temperate evergreen forests are found in warm temperate regions. अब ये forest कहाँ मिलते हैं? गर्म जो temperate region होते हैं वहाँ. They consist mainly of evergreen trees that retain their leaves throughout the year. और यहाँ पे evergreen trees होते हैं जिनकी की leaves हमेशा पूरे साल में वो leaves रहती हैं. These forests are located in mid-latitudinal coastal regions. They are commonly found along the eastern margins of the continent. कहाँ मिलते हैं ज़्यादातर? Continent के eastern margins. Temperate evergreen forests occur in eastern North America and in the Mediterranean basin. They also include subtropical broadleaf evergreen forests of the southeastern United States, southern China, Uruguay, and southeastern Brazil. Subtropical broadleaf evergreen. These forests are a mix of softwood and hardwood trees. और इन फॉरेस्ट में कैसे trees मिलते हैं? Softwood trees भी होते हैं और hardwood trees भी. Where the lowlands usually have mixed forest of deciduous and coniferous varieties, while only coniferous trees grow in highlands. The forest is dense and its wood is wet. क्योंकि इसका wood furniture और buildings में use है. The main trees found are pine, walnut, eucalyptus, camphor, oak, and wattle. Temperate deciduous forest. This is the fourth type of forest. Temperate deciduous forests occur in eastern North America, Central Europe, and New Zealand. अभी जो temperate deciduous forest ये कहाँ है? Eastern North America, Central Europe, and New Zealand. They receive between 75 and 150 centimeter of rainfall each year. हर साल यहाँ पे 75 से लेके 150 centimeter तक बारिश होती है. Trees here generally have thick trunk and broad leaves which they shed in autumn and remain leafless throughout winter. अब यहाँ जो trees हैं उनके thick trunk होते हैं, बहुत मोटे trunk होते हैं और बहुत चौड़ी leaves होती हैं
जो जिन्हें कि वो शेड कब करते हैं, ऑटम सीजन में सारे लीव्स गिर जाते हैं और ये पूरे विंटर्स, पूरे ठंड में ये लीफलेस रहते हैं, उन पे लीफ नहीं है। न्यू लीव्स स्प्राउट इन स्प्रिंग सीजन एंड ग्रोथ इज क्विक ड्यूरिंग समर। अब जो नए लीव्स कब आते हैं, वो आते हैं स्प्रिंग सीजन में और उसकी ग्रोथ जो होती है, जल्दी जल्दी ग्रोथ कब होती है, जब गर्मियां पड़ती हैं। The vegetation of temperate deciduous forests include a variety of broadleaf trees. अब यहाँ broadleaf trees होती हैं कौन कौन से, such as oak, beech, cherry, maple, ash, elm, cedar, redwood, hickory, etc., as well as various shrubs, perennial herbs, mosses, and mushrooms. Temperate deciduous forests occur in mid-latitudes between the polar regions and the tropics. पोलर रीजन और ट्रॉपिक्स के बीच में ये फॉरेस्ट टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट होती है, मिड लैटिट्यूड्स। डियर्स, फॉक्सेस, वुल्व्स आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड। ये एनिमल्स मिलते हैं। पिजन्स, मोनाल्स एटसेट्रा आर कॉमनली फाउंड बर्ड्स हियर। नाउ वी कम टू द मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। द मेडिटेरेनियन वुडलैंड्स एंड फॉरेस्ट आर फाउंड अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। As the name says, Mediterranean Sea के आसपास Mediterranean forest मिलते हैं। They stretch from the coastal plains to the hills of northern Morocco, Algeria, and Tunisia, and eventually surround the Atlas Mountains. इनका जो stretch है ये यहाँ तक फैले हुए हैं। To the north is the Alboran Sea, the westernmost element of the Mediterranean Sea. Now, did you know, children? Many species in the rainforest work together in a symbiotic relationship. For example, some plants are home to ants, which prevent other insects from eating the plants. Now, there is a moderate rainfall of about 80 centimeter during winter season. अब इस Mediterranean forest में moderate rainfall 80 centimeter तक का होता है, कब? Winter season में, ठंड में। The variety of substrates and climates lead to a diverse mix of vegetation, including homes, oak forest, cork oak forest, wild olive, and carob woodlands, as well as extensive Berber tuya forest. ये सब forest यहाँ हैं. They are known as the orchards of the world. इन्हें क्या कहा जाता है? Orchards of the world for their fruit cultivation. या फ्रूट कल्टीवेशन होता है, इस वजह से इन्हें ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड कहा। सिट्रस फ्रूट्स ग्रोन हियर आर ऑरेंजेस, ऑलिव्स, फिग्स, पीचेस, ग्रेप्स, प्लम्स एटसेट्रा। दीज आर ऑल सिट्रस फ्रूट्स। इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड हियर आर ओक, ऑलिव, फिग, पाइन, cedar, fir, and cypress. These are the important trees which are found in the Mediterranean forest. Olive oil, nuts, and fruits are products of these forests. Bushfires are a very common occurrence. Bushfire जल्दी जल्दी यहाँ पे लग जाते हैं. Some species actually depend on fire to germinate their seeds. अब कुछ species तो fire पे ही depend करते हैं, जो wood fire होता है यहाँ, इसी पे dependent रहते हैं, जिससे कि इनका seed germinate हो. Mediterranean trees adapt themselves to dry summers with the help of thick barks and wax-coated leaves, which help them to reduce the water loss caused by the process of transpiration. Just because of their thick bark, उनकी thick bark होती है और wax-coated leaves होते हैं, जो कि उनको help करते हैं water loss. The region harbors very few animals. The region harbors very few animals, including the rare and endangered Barbary leopard. यहाँ बहुत कम ही एनिमल्स मिलते हैं, जिसमें कि रेयर और endangered जो है वो है Barbary leopard. Unfortunately, this region contains expanding human population. It is enduring widespread deforestation and loss of the already scarce wildlife. और human life वहाँ expand हो रहा है, human population expand हो रहा है, जिससे कि deforestation भी हुआ है बहुत ज़्यादा, और स्केर्स जो बहुत ही कम वाइल्ड लाइफ यहाँ मिलती है वो भी खत्म होती जा रही है. नाउ वी कम टू द कॉनिफेरस फॉरेस्ट. दे आर फाउंड इन द हायर लैटिट्यूड्स 50 डिग्री to 70 डिग्री of northern hemisphere. Northern hemisphere
के हायर ऑल्टीट्यूड्स में ये फॉरेस्ट, although some are found in the southern hemisphere, और कुछ southern hemisphere में भी मिलते हैं. The northern coniferous forests are called taiga or boreal forest. They cover vast areas of North America from the Pacific to the Atlantic and range across northern Europe, Scandinavia, Russia, and across Asia through Siberia and Mongolia to northern China and northern Japan. यहाँ ये coniferous forests हैं. Plant growth in these forests is low due to very cold winters and short cool summers. यहाँ पे plant growth बहुत कम होता है. किस वजह से? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, cold winters and जो summers है वो भी बहुत short period के लिए आता है, लेकिन वो भी cool होता है, ठंडा होता है. Coniferous trees such as cypresses, cedars, pines, spruce, hemlocks, and redwoods are found in warmer region. Warmer region में ये सब trees मिलते हैं. The needle-like leaves have a waxy outer coat which prevents water loss in freezing weather, and the branches are soft and flexible and usually point downward so that the snow slides off them. अब यहाँ की जो trees है वो कैसे होती है? उनके नीडल लाइक जो लीव्स होते हैं वो नीडल की तरह होते हैं, सुई की तरह होते हैं, एंड उनका जो आउटर कोट होता है वो वैक्सी होता है, चिकना होता है, जो कि वाटर लॉस होने से हेल्प करता है और इस फ्रीजिंग वेदर में. एंड उसकी जो ब्रांचेस हैं वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती हैं, और यूजुअली वो ब्रांचेस क्या होती है वो डाउनवर्ड पॉइंट करती है, जिससे कि जब स्नो गिरता है तो वो स्नो सारा नीचे चला जाता है, उस पर जमता है. Larch is an example of coniferous trees. Common animals are silver fox, mink, and polar bear. These animals are found here. Lumbering is done here on a very large scale, as coniferous trees are very useful for making pulp, which is used for manufacturing paper and newsprints. Okay, जो coniferous trees हैं ये useful किस लिए हैं? Pulp बनता है इनसे, जो कि मैन्युफैक्चर क्या करने में हेल्प करता है? पेपर और न्यूज प्रिंट मैन्युफैक्चर करते हैं इस पल्प. मैच बॉक्सेस, डेकोरेटिव पीसेस, पैकिंग बॉक्सेस, टॉयज, स्पोर्ट्स गुड्स एटसेट्रा आर आल्सो मेड फ्रॉम दिस सॉफ्ट. नाउ we'll read about the grassland. Grasslands develop wherever rainfall is not high enough to produce a forest. अब ये grasslands कहाँ डेवलप होती है? जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं है. About 1/4 of the Earth's land is comprised of grasslands. There are few trees in true grassland. जो सही में grassland होता है वहाँ पे बहुत कम trees होते हैं. Either because the climate is too dry or the soils are too poor. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि या तो soil बहुत ज़्यादा dry होती है, सूखी होती है, या वहाँ पे क्या होता है? The soils are too poor. जो soil होता है वो भी fertile नहीं है, बहुत poor quality है. In other areas, grasslands develop because grazing and browsing by wild animals, frequent fire or both prevent tree seedlings from growing. The largest grassland is the savanna in Africa. जो सबसे बड़ा grassland है वो है savanna, जो कि अफ्रीका में. There are two broad types of grassland in the world. पूरे वर्ल्ड में दो टाइप के grasslands हैं, tropical savanna and temperate grasslands. Now let's read about the tropical grassland or savanna. Those regions closer to the equator are hot all the year. We all know कि जो भी region, जो भी जगह equator के पास में है वो हमेशा गर्म है. Tropical savanna occurs in Africa, Australia, South America and Indonesia. इन जगहों पे tropical savannas हैं. Tropical deserts are located in the western margins of the continent. और जो tropical deserts है वो कहाँ है? Western margin में, continents के western margin. These grasslands are known by various names in different parts of the world. That is, parkland in America. अब अलग-अलग नाम से ने अलग-अलग जगहों पे बोला जाता है. अमेरिका में parkland, Llanos in Venezuela and Colombia, Campos in Brazil, Argentina and Uruguay.
The vegetation cover is scarce here because of scanty rain and scorching heat. Vegetation यहाँ पे बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है. Scanty rainfall and scorching heat, बहुत ज़्यादा गर्मी. Soils are usually very thin, supporting only grass and fox flowering plants. अब जो यहाँ की सॉइल है वो बहुत पतली लेयर होती है इसकी, जिसमें कि कुछ छोटे छोटे जस्ट ग्रासेस उगते हैं और छोटे छोटे जो प्लांट्स जिसमें कि छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं वो, with only scattered trees and shrubs. Thus, tall grasses about 2 meter to 4 meter grow here. In many areas, the grassland have been burned to maintain a healthy grass crop for grazing animals. In some areas, the savanna has been expanded by cutting the forest and burning the area each year to prevent the return of trees. और कहीं पे तो सवानास को एक्सपैंड कैसे किया गया है, कटिंग, फॉरेस्ट को कट कर दिया गया है, बर्न कर दिया जाता है हर साल, जिससे कि ट्रीज वापस ना हो. These regions support a wide variety of wildlife. अब यहाँ पे wildlife कौन सी है? Like zebra, deer, giraffe, elephant, leopard, hyena, panther, wild buffalo, and rhinoceros. Okay. Now see, this is temperate grassland. Now we'll read about the temperate grassland. At higher elevations, temperate grasslands are common. Higher elevation पे जो होते हैं वहाँ temperate grassland मिलते हैं. They are farther away from the equator. Equator से बहुत दूर है. They have both hot summers and harsh winters, such as the U.S. prairies. जैसे U.S. prairies में है hot summers भी होता है यहाँ पे और harsh winters भी. They are located in the mid-latitudes, north of the Tropic of Cancer and south of the Tropic of Capricorn. Tropic of Cancer के north में और Tropic of Capricorn के south में. They generally lie between deserts and temperate forests. ये कहाँ पे मिलते हैं temperate grassland? Desert और temperate forest के बीच में. Temperate grasslands have less rainfall, 25 to 90 centimeters, than tropical grasslands. अभी जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं यहाँ पे कम बारिश होती है जितना कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में होती है, वहां से कम होती है. एंड अ मच ग्रेटर रेंज ऑफ टेम्परेचर्स फ्रॉम विंटर टू समर दैन समर. समर टेम्परेचर्स कैन बी वेल ओवर 38 डिग्री सेल्सियस. नाउ 38 डिग्री से भी ऊपर का जो टेम्परेचर होता है समर का होता है, व्हाइल विंटर टेम्परेचर्स कैन बी एज लो एज -40 डिग्री सेल्सियस. Winters का -40 degrees. They are most suitable for cattle and sheep rearing. Sheep rearing और cattle rearing के लिए ये temperature best. Trees are rare in the temperate grasslands because there is not enough moisture for them to grow, as they have longer life cycles and need longer growing season than grass. यहाँ इसलिए trees बहुत कम मिलते ही नहीं. The temperate grassland is very low in diversity in terms of animals, especially in comparison with the tropical grassland. Tropical grassland से temperate grassland में जो diversity of animals है ना, ये बहुत कम होता है. Horses, wolves, rabbits, wild dogs, wild buffaloes, bisons, antelopes, and rodents are common in temperate grasslands. A number of birds are also found, such as kites, eagles, owls, etc. Maize and wheat are grown in large amount. यहाँ maize और wheat जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है. That is why this area is also known as the bread basket of the world. इसलिए इस जगह को, इस एरिया को क्या कहते हैं? bread basket of the world. Grasslands are called by different names in different parts of world. अब grasslands को अलग-अलग नामों से वर्ल्ड के अलग-अलग पार्ट्स में बुलाया जाता है. अलग अलग नाम है इनके. प्रेरीज और प्लेन्स. यूएसए में क्या बोला जाता है? प्रेरीज और प्लेन्स. यूरोप में स्टिप्स, अफ्रीका सवानास एंड साउथ अमेरिका पैम्पास. ओके, नाउ लेट्स रीड अबाउट द shrubs. A shrub is a small to medium sized woody plant. It is distinguished from a tree by its multiple stems and shorter height. उसके मल्टीपल स्टेम्स होते हैं श्रब्स के और हाइट भी बहुत कम होती है. Usually less than 6 feet. Plants of many species may grow either into shrubs or trees depending on their growing conditions.
ग्रोइंग कंडीशंस पे सब डिपेंड करता है कि वो श्रब्स बनते हैं या ट्रीज। श्रब्स ग्रो इन एक्सट्रीम कोल्ड एंड हॉट एरियाज, और ये जो श्रब्स हैं ये एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज में भी मिलते हैं और एक्सट्रीम हॉट एरियाज में भी ग्रो। नाउ डेजर्ट वेजिटेशन। अ डेजर्ट इज अ barren area of land where little precipitation occurs and consequently living conditions are hostile for plants and animal life. Desert क्या होता है? barren area of land. This is a desert जहाँ की बहुत कम precipitation होता है, बारिश नहीं के बराबर होती है. About 1/3 of the land surface of the world is arid or semi-arid. These are found in the tropical and subtropical regions. कहाँ मिलते हैं? Tropical या subtropical region. There is very little plant life in a desert due to lack of water. जैसे कि यहाँ पानी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो trees हैं, जो plants हैं, वो भी बहुत कम ही दिखाई देते हैं. Only those plants that have adapted to the extremes of heat and aridity by using both physical and behavioral mechanism can survive. जो कि अडेप्ट हो चुके हैं वहाँ वही प्लांट्स उगते हैं जो कि वहाँ के कंडीशंस को अडेप्ट हो चुके हैं. Some plants store water in leaves, stem or roots. अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि पानी को किस में अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं? लीव्स में या स्टेम में या रूट में. Some plants have long roots to tap into the water deep underground and short life cycles. अब कुछ plants ऐसे हैं जिनके roots बिल्कुल डीप अंडरग्राउंड वाटर्स तक जाते हैं और इनकी लाइफ साइकिल भी बहुत कम है. A plant or seed could remain dormant until the rain comes. Some of the plants found commonly in the deserts are, अब डेजर्ट में कौन कौन से plants मिलते हैं? Cactus, small shrubs, desert marigold and dried up grass. The plants there need to save water for a hotter time. अब जो यहाँ जो plants होते हैं वो पानी को सेव करते हैं गर्मी के लिए. Camel is the most common animal found in the desert. इन deserts में जो camel है वो सबसे main animal, common animal. Wild ass, hyena, scorpion, fox, jackal, etc. are also commonly seen. Some of these animals move out at cool nights and some live in burrows to escape the heat of the day. अब यहाँ कुछ animals जो हैं वो तो रात में निकलते हैं जब ठंडा हो जाता है और कुछ एनिमल्स पूरे दिन बरोज के अंदर ही बैठे रहते हैं गर्मी से बचने. डेजर्ट्स हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर्स. अब डेजर्ट्स का टेम्परेचर कैसा होता है? एक्सट्रीम. ड्यूरिंग द डे द टेम्परेचर मे रीच 50 डिग्री सेल्सियस व्हाइल एट नाइट इट मे फॉल बिलो 0 डिग्री. डे में तो 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात को 0 डिग्री. Deserts have less than 250 millimeter of rainfall per year. 250 millimeter से भी कम rainfall होती है deserts में. The rain can be unreliable. Most deserts are found between 20 degree and 35 degree north and south of equator. 20 degree और 35 degree north and south of equator में ज़्यादातर deserts मिलते हैं. The Sahara is the largest desert, covering an area of 9 million square kilometers. Sahara is the largest desert. Now, the tundra vegetation. The tundra is the coldest biome on the earth. सबसे ठंडा है earth. With average annual temperatures ranging from -40 degrees Celsius in the winter to 18 degrees Celsius in the summer. All the time. Throughout it is cold, ठंडा ही होता है. The winter is much longer than the summer in the tundra. जो winters होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं, summers कम होते हैं. And as a result, the temperature is below freezing 0 degrees Celsius for the majority of the year. ज़्यादातर पूरे साल में ये below freezing temperature ही रहता है. The tundra only receives between 6 to 10 inches of precipitation a year, which is less than most of the deserts on the earth. Now, tundra comes from the Finnish word tunturia, meaning treeless plain. अब ये tundra कहाँ से आया ये word? ये एक फिनिश वर्ड से आया है, tunturia से, जिसका मतलब होता है treeless plain. वहाँ बिल्कुल पेड़ नहीं उसमें.
It is noted for its molded landscape, little precipitation, poor nutrient, low temperatures, and short growing seasons. Tundra vegetation is found in Asia, North America, Europe, and North Pole. यहाँ tundra vegetation मिलती है. The trees survive in this region are often small, which reduces the damage caused by the wind and makes possible for these trees to be covered with snow in the winter season. Fine, बहुत छोटे trees होते हैं. Commonly found plants in tundra biome are dwarf shrubs, grass and lichens. ये मिलते हैं. Dwarf means छोटे shrubs. Animals have fur on their bodies to protect them from the cold. अब यहाँ जो animals होते हैं उनकी body पे fur होता है जिससे कि वो ठंड से बच सके. Walrus, seal, musk, ox and polar bear and snow foxes are found here. Fine, children? Now, importance of natural vegetation. What is the importance? This vegetation provides shelter to animals, timber and many other forest producers to humans. They provide oxygen. एक तो ये shelter provide करते हैं animals को, okay? Humans को क्या provide करते हैं? Timber और बहुत सारे अलग-अलग forest produce करते हैं. They provide oxygen. The main thing is they provide oxygen. Oxygen मिलता है. Plants protect soil from degradation and help in recharging groundwater. Now the wildlife. Animals, birds, insects and all aquatic life form the wildlife. इन सभी से मिलके वाइल्ड लाइफ बनता है जिसमें कि एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं और जितने भी पानी के जीव हैं. We get meat and leather from animals, honey from honeybees. Insects are major pollinators. अब हमें जो insects होते हैं ये pollination में काम करते हैं ना, and help not only the plants but human beings also. Some animals play the role of scavengers and clean the dead remains and thus the environment. कुछ animals जो हैं वो जो dead remains होते हैं animals के उसको clean up करते हैं, खा जाते हैं जिससे कि environment neat and clean रहता है. All animals play an important role in maintaining the balance in the ecosystem. Ecosystem का balance बनाए रखने के लिए सारे animals जो हैं वो एक important role play करते हैं. So these life forms help to sustain each other in regular patterns. Disruption to an ecosystem can be disastrous to all living beings. अब ecosystem में जरा सा भी disturbance अगर होता है तो ये disastrous हो सकता है सभी living beings के लिए. However, humankind has been increasingly affecting and distributing this delicate balance within different ecosystems around the world. और human जो है वो कहीं ना कहीं affect करता ही है, disturb करता ही है इस balance. To preserve it, we need to be more aware and careful. Awareness about their importance need to be spread among all people in all communities. और ये awareness इनको preserve करने का जो awareness है वो हमें चारों तरफ फैलाना चाहिए, सभी में फैलाना चाहिए in all the communities. Okay, children. Now, do you know polar bear looks white but actually has black skin? जो पोलर बेयर है ना वो व्हाइट दिखता है लेकिन उसका स्किन कैसा है? ब्लैक है. तो उसके ऊपर फर होता है इसलिए वो व्हाइट कलर का दिखता है. Now the glossary here means some words are given, the meanings are given. Just go through them, children. Now a quick review. क्या पढ़ा हमने अब तक? Forests are found in humid climate. Grasslands are found in regions of moderate rainfall and shrubs grow in dry regions. Evergreen forests are so called because they remain green all throughout the year. पूरे साल वो green रहते हैं. Deciduous forests are those in which trees shed their leaves in a particular season. Grasslands can be classified into two main types: tropical grassland and temperate grassland. Desert plants have long roots, thick barks, waxy stems, and spiny or hairy leaves to reduce the rate of transpiration. And lastly, tundra region is mostly covered with snow and only mosses and lichens grow. The need of the hour is to conserve our wildlife
The need of the hour is to conserve our wildlife resources and natural vegetation cover. Okay, children? Now, children, let's answer few questions here. Darken the circle of correct option in OMR sheet. What is the other term for tropical evergreen forest? Tropical evergreen forest for क्या कहते हैं? Temperate rainforest, tropical deciduous forest, tropical rainforest, temperate deciduous forest. They are known as tropical rainforests. The northern coniferous forests are called taiga, tropical deciduous forest, monsoon forest, Mediterranean forest. They are known as taiga. Which vegetation is most suitable for cattle and sheep rearing? Temperate grassland, desert vegetation, tundra vegetation, rainforest. Temperate grasslands are very suitable. Hot summers and harsh winters are found in temperate grasslands, savanna, deserts, monsoon forests. They are found in temperate grasslands. Mangrove forests are in Kerala, Bihar, Karnataka, Punjab. कहाँ है mangrove forest? In Kerala. Now fill in the blanks. Here are a few words given. Let's read them first. Evergreen, forests, coniferous, treeless, plains, deciduous. The principal type of natural vegetations are dash, shrubs and green lands. They are the forests, shrubs and the green lands. So just write down forests here. The word tundra comes from the Finnish word tunturia, which means treeless plains. So now write down here treeless plains. Okay. Dash are found in higher altitudes of northern hemisphere. What are found? Coniferous are found. Coniferous. Coniferous are used. Take conifers. Now, two are left, evergreen and deciduous. See what's next. So, two words were left. दो words को कौन से थे? Evergreen and deciduous. Evergreen and deciduous. Okay. Dash forests consist mainly evergreen trees that retain their leaves throughout the year. Evergreen forest. Evergreen forests. Trees of dash forest shed their leaves at the beginning of summer to conserve water. Trees of deciduous forest. Deciduous. Now children, next is say if the given statement is true, T, or false, F. Temperate evergreen forests are also called taiga. No, this is false. Right, F here. Larch is an example of coniferous trees. Yes, this is true. T. Temperate grasslands have less rainfall than tropical grasslands. This is also true. Big trees are found in the tundra. Is it true? No, this is false. Big trees are not found in tundras. Answer the following questions. What is natural vegetation? Natural vegetation, it is the plant life that grows in a particular area without any human intervention. Okay children? Why are the leaves of coniferous trees needle shaped? जो coniferous trees की जो leaves होती हैं वो needle shape की क्यों होती हैं? They are of needle shape so that to reduce water loss and withstand harsh environmental conditions like cold temperature and strong winds. Which type of plants survive in deserts? कैसे plants desert में survive करते हैं? Desert plants typically are adapted to arid conditions and have deep root system. Okay? What is the importance of wildlife? तो अभी हमने चैप्टर में पढ़ा वाइल्ड लाइफ क्या होती है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है.
So just go through the chapter again, read it, and then find out the importance of wildlife and write it down. Write a short note on vegetation of the Mediterranean region. तो अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था मेडिटेरेनियन रीजन के बारे में और वहाँ का वेजिटेशन कैसा होता है, किस टाइप का वेजिटेशन वहाँ होता है. सो रीड इट एंड देन write it down here. Find it out from the chapter. Okay, children? So, here we end up with this chapter, and I hope many informations have been received from this chapter. You have got many information about the different types of vegetation, the natural vegetation. Okay, children? So, stay tuned for the next video. So, in the next video, we will meet again with a new chapter. Till then, keep learning, stay happy. Bye.